Welcome, my dear friends. Now, in this session, we're gonna solve a very beautiful theoretical type question, a match a column type question. That means here two lists are available: list first and list second. And in list first, some basics question gonna be asked by the examiner, and in list number second, some explanation is throughout by the question. And आपको ये list first और list second को match करना है एंड ऑप्शन में आपको टिक करना है. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर आवर क्वेश्चन कि इस प्रॉब्लम में मेन क्वेश्चन हमारा है क्या. ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे. सो हियर आवर क्वेश्चन इज दैट कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड, मैच लिस्ट फर्स्ट with list second and select the correct answer and select the correct answer using the codes. Okay, using the codes given below the list, given below the list. Is it right? So first of all we have to write our list number first. Okay, so this is your list number first, and here your list number second. And so here in A, what is your list? कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यहाँ पे आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर लिखा हुआ मिलेगा. माय डियर फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में और गेट में एंड स्टेट पीएससी में सबसे ज्यादा इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाता है. यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर, टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर. Okay, and again here is B. In B section, dew point temperature is given, dew point temperature. Okay, and here in list number second, your second point is temperature of air adiabatically, temperature of air adiabatically saturated with water, okay. And here your C point is thermodynamic wet bulb temperature, thermodynamic wet bulb temperature. That means your here third point is temperature indicated by a wet bulb, temperature indicated by wet bulb thermometer. Okay, and again a extra point is given in list number second. एंड यहाँ से अब आपका क्वेश्चन बनने वाला है टिपिकल, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट देने का मतलब क्या है कि अब आपको और ज्यादा एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाह रहा है. हियर योर एक्स्ट्रा पॉइंट इज व्हाट? saturation temperature corresponding to saturation temperature corresponding to partial pressure of water vapor in moist air. ओके, तो ये इतनी चीजें आपको गिवन है. एंड हियर ऑप्शन इज here your first option
A, this is your B option, this is your C option, and this is your D option. Total 4 option is there. Okay, and here A, B, C is given in this format. Your question is asked by the examiner. Okay, यहाँ पे आपको गिवन है 1 4 3 इस तरीके से, यहाँ पे आपको गिवन है 2 2 3 4 इस तरीके से, एंड सी ऑप्शन में आपको गिवन है 3 4 1 इस तरीके से, एंड डी ऑप्शन में गिवन है 1 4 2, ये इस तरीके से आपको गिवन है। अब एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है ना। अब एग्जामिनर इसमें ये पूछ रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्वेश्चन को एनालाइज करो आप। यहाँ पे ये क्वेश्चन को एनालाइज करो और देखो कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर एग्जामिनर बोल रहा है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर ऑफ व्हाट, टेम्परेचर ऑफ वेपर या फिर मॉइस्ट एयर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर। दैट मीन्स योर करेक्ट ऑप्शन फॉर योर ए इज व्हाट, फर्स्ट, ये फर्स्ट है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। टेम्परेचर ऑफ एयर adiabatically saturated with water, no. Temperature indicated by wet bulb thermometer, no, never. Okay, here saturation temperature corresponding to partial pressure of water vapor in moist air, मतलब ये एक saturation temperature होता है इसका partial pressure of water vapor in moist air। that means dew point temperature के लिए आपका जो correct आंसर होगा ये 4 नंबर का होगा। एंड थर्मोडायनामिक वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, एडियाबैटिकली जहां आए वही है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर। दैट मीन्स आपका ये 2 नंबर सी के लिए करेक्ट होगा। दैट मीन्स ए के लिए कौन सा करेक्ट है 1, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बी के लिए कौन सा करेक्ट है 4, यहाँ भी देखने को मिल रहा है ये इस तरीके से। एंड सी के लिए कौन सा करेक्ट है सेकंड, यहाँ पे थर्ड है। दैट मीन्स ये ऑप्शन टोटली रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, एंड दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से मैच द कॉलम टाइप के भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।